Hello everyone, welcome back to the Political Science lecture series on Near Peer. In today's lecture, we're going to discuss fascism and Nazism and how these ideologies were the result of certain events of the 20th century. These terminologies are very commonly used even in today's political lexicon. लेकिन उनकी कुछ खास essence है, कुछ खास ideas और principles हैं around which these political concepts revolve. So let's look at them one by one. फाशिज्म का जो अपना निज़ाम जो शुरू हुआ था वो इटली से हुआ था विद द इटालियन फाशिस्ट रूलर बेनिटो मुसोलिनी और द वर्ड फाशिज्म कम फ्रॉम दिस इटालियन वर्ड जिसका मतलब है बंडल ऑफ वुड और एंशिएंट रोम के अंदर रोमन एम्पायर का जो सिंबल हुआ करता था ये वाला दिस कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल ऑफ वुड एंड एग्स. तो अगर आप and this was the symbol for fascism. Bundle of wood and eggs was considered to be this symbol of fascism, and उसके अंदर एक symbolic message included है. This bundle of wood tied together is representation of strength and authority and power, is of unity. Sorry, is this idea about unity, and the X is the symbol of strength and power. So the message in the very basic word of fascism और जो fascism जिस symbol से inspired है जिसको own करता है उसका basic message वो ये है कि there is unity in strength and that we are stronger when together, we are powerful when together. That is why fascism जितने structures रहे हैं वो collectivist nationalism और nationalistic principles के बहुत ज़्यादा believe करते थे. तो अगर हम broadly fascism को define करें so it is an authoritarian regime that puts an emphasis on hyper-nationalism. एक बहुत ज़्यादा strong hyper-nationalism जिसके अंदर एक collective sense of identity है और एक उसके ऊपर एक बहुत strong एक authoritarian regime है. Now we're going to look at the question from past paper, which is the principles of fascism. So there are certain broader principles that we can extrapolate from the 20th century history regarding fascism. The first amongst them being that it believes in dictatorship of one national leader and it hates and repulses democracy. तो fascism democracy पे believe नहीं करता और एक लीडर की dictatorship पे believe करता है. मुसोलिनी ने खुद अपनी तकरीरों के अंदर कहा था कि that there are three principles जो कि इसके अंदर important है. There's responsibility, obedience to one leader and discipline. तो fascism एक highly centralized और centrally controlled administration में believe करते हैं जिसमें एक authoritarian charismatic leader पूरी की पूरी administration को iron fist के साथ rule करे. Second, it opposes individualism and favors collectivism. आप ये quotation भी use कर सकते हैं अपने exam के अंदर. Fascism चूंकि believe करता है state के और society के interest के ऊपर interests in quote unquote what the state thinks is the interest of the society और individual की किसी भी किस्म के right, किसी भी किस्म की freedom, किसी भी किस्म की liberty में believe नहीं करता. Hence it believes in very strong forms of collectivism and doesn't believe in individualism. Third is one of the very important principles of fascism is that it advocates hyper-nationalism. It believes कि जो आपकी nation है वो ही सबसे important सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंडिविजुअल और नेशन की टसल के अंदर आपकी नेशन शुड बी सुप्रीम. सो इंडिविजुअल के राइट्स मैटर नहीं करते, सिर्फ जो लार्जर नेशनल इंटरेस्ट है और ये वो नेशनल इंटरेस्ट है जो एक डिक्टेटर फाशिस्ट डिक्टेटर एट द टॉप डिफाइन कर है. एंड नोटिस नेशनलिज्म इज ओके जनरली बट हाइपर नेशनलिज्म इज नॉट. हाइपर नेशनलिज्म में आप रियासत जो है वो एक्सट्रीम लेवल्स पे जाते हुए individuals के rights को suppress करती है for what they consider to be the national interest, which is of course leads to very unintended consequences. The fourth is the creation of totalitarian state. Totalitarian state से मुराद ये है authoritarian state वो होती है जो बहुत iron fist से rule करे और उसका बहुत ज़्यादा authority से और वो repression करे या exploit करे या oppress करे लोगों को. But totalitarian state is similar to authoritarian state, but it has another added element, which is that it controls every aspect of the citizen's life, their social, their economic, their personal, their political. They control everything about the citizen's life. So
फाशिस्ट स्टेट्स जो हैं वो टोटलिटेरियन स्टेट्स भी होती हैं और वो हर तरह की चीज के ऊपर गाइडलाइंस और इशू करते हैं. जैसे आप नॉर्थ कोरिया के अंदर देखें, नॉर्थ कोरिया टुडे इज अ टोटलिटेरियन स्टेट. और अगर इट्स अ फन फैक्ट एंड it also explains the degree to which there is totalitarianism in North Korea, that North Koreans cannot have a hairstyle of their choice. There are certain, I think there are 8 to 12 hairstyles which are sanctioned by North Korean state, और North Korean citizens उनमें से ही कोई एक हेयर स्टाइल रख सकते हैं, उसके बाहर कोई हेयर स्टाइल नहीं रख सकते. So it's like a totalitarian state that's controlling, like there's such a personal element of your life as well. But broadly speaking, आपकी सारी, आप कहाँ जाते हो, आपकी मूवमेंट सारी ट्रैक होगी, आप क्या प्रोफेशन चूज करते हो, आप किस फील्ड में जाते हो, ये सारी चीजें भी अगर स्टेट आपके लिए डिसाइड करे, then it's a totalitarian state. Fifth is the belief in violence, force and imperialism. हाइपर नेशनलिज्म का एक कॉन्सिक्वेंस ये भी है कि आप फिर नेशन को एडवांस करने के लिए हर किस्म का हरबा एतबार करने के लिए तैयार है. कि अगर आपको लगता है कि नेशन के इंटरेस्ट में अगर वो वॉर करे तो वॉर करेंगे. और वॉर मॉन्गरिंग, जब एक हाइपर नेशनलिस्टिक माइंडसेट होगा तो वॉर मॉन्गरिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है. देयरफॉर फाशिस्ट स्टेट्स हमेशा वायलेंस यूज करते हुए नेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं. तो इसके अंदर नेशनल ऑब्जेक्टिव्स का एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो उन नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए इंपीरियलिज्म, वायलेंस, कोर्जन, सिटीजंस को अगर टॉर्चर करना पड़े अपने टू मेक देम कोवर्ट्स एंड टो द लाइन एंड फॉलो द नेशनलिस्टिक नैरेटिव, तो वो भी करेंगे. सो वायलेंस एंड इंपीरियलिज्म बिकम्स rampant, and that is why we see कि मुसोलिनी ने इथियोपिया को कॉन्कर किया था in order to restore the Italian prestige, यानी अपने नेशन को की वो मान बढ़ाने के लिए उनका उसके अंदर he engaged in the war. The next is opposition to internationalism and international law. Again, since fascism believes in hyper-nationalism, therefore, it means that nation is important. Nothing within, like not the atomized individuals and not the external actors. Hence, international law is redundant. It is not important because it can sometimes be not in the interest of the nation. What the fascist state thinks is the national interest. तो इस तरीके से मुसोलिनी और फाशिस्ट रिजीम्स ये बिलीव करती थी कि अगर इंटरनेशनल लॉ को फॉलो किया जाए तो हम अपने नेशनल ऑब्जेक्टिव्स फॉलो नहीं कर सकते. एंड वन ऑफ दोस नेशनल ऑब्जेक्टिव्स बीइंग इंपीरियलिज्म, बिकॉज इंटरनेशनल लॉ डज नॉट अलाउ इंपीरियलिज्म. तो दे अपोज international law. They oppose all forms of external restrictions that could hinder their bellicose and imperialist ambitions. So hence they were opposed to international law. That is the reason why Mussolini Italy gave up the membership of League of Nations in favor of military alliances, because League of Nations का हिस्सा बनने से आप उस टाइम का जो rudimentary international law था आपको उससे conform करना पड़ना था. That's why Mussolini rejected the membership. The seventh is the creation of a different hybrid economic system. They did not believe in capitalism. They did not believe in socialism in the sense के वो capitalism का जो principal absence of state intervention in market and complete private ownership, वो इसको भी रिजेक्ट करते थे. और वो सोशलिज्म की जो नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज है वो इसको भी रिजेक्ट करते थे. वो सिर्फ चंद इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज करने की बात करते थे, लेकिन जो बाकी प्राइवेट ओनरशिप है, चूंकि एक टोटलिटेरियन स्टेट है तो वो प्राइवेट ओनरशिप और प्राइवेट इकोनॉमिक फ्रीडम भी मुकम्मल तौर पे नहीं देगी. तो वो एक हाईली कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड प्राइवेट ओनरशिप को भी बहुत ज्यादा रेगुलेट करता था और कंट्रोल करता था. प्लस वो कैपिटलिज्म से इसलिए डिसएग्री करते थे, उसको चलने नहीं देते. कैपिटलिज्म बिलीव्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल, और वो ये बात नहीं मानते, वो मानते हैं इंटरेस्ट ऑफ द नेशन. और जो आपके सोशलिस्ट थे, दे बिलीव्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर क्लास एंड द पेजेंट्स, द वर्कर क्लास, द लोअर क्लासेस, द पुअर. बट फाशिस्ट बिलीव करते थे अगेन के nation important है. So for them nation is the most important, not workers as the socialists would like to point out, or as the capitalists would like to point out in that sense. The next is the concept of Nazism, and Nazism was started under the Adolf Hitler's regime in Nazi Germany, and it's a closely associated concept with
the fascism, but it has certain different nuances to it. दोनों चीजों में बहुत commonalities हैं. Both Nazism and fascism rejected these predominant ideologies of liberalism, Marxism, and democracy, and they both emphasize strongly nationalism, totalitarianism, and imperialism. Mussolini के टाइम पे आपको fascism का concept और उसकी खास nuances ज्यादा नजर आती हैं, और Nazism on the other hand was more prevalent in Nazi Germany. जो fascism का doctrine of fascism, which is the central core document that explains the fascist theory, उसके अंदर nationalism, corporatism, totalitarianism, militarism जो हमने अभी ideas discuss किए हैं, उनका ये brief ideas है, उन पे emphasize करने की बात करता था. जबकि Nazism रेसिज्म पे बहुत एम्फसाइज करता था. तो जब फाशिज्म के लिए स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट थी, और वो स्टेट जो कि हाइपर नेशनलिज्म पे हिंज कर रही है, ऐसी रियासत पे वो बिलीव करते थे. नाजिज्म में रेसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट था, जबकि अंडर फाशिज्म रेसिज्म वाज ऑफ लेस इंपॉर्टेंस. तो अंडर नाजी डॉक्ट्रिन आर्यनिज्म वाज मोर इंपॉर्टेंट. आर्यनिज्म वाज दिस कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय एडोल्फ हिटलर के द जर्मन्स आर आर्यन रेस and Aryans are superior race. So the German ethnic Aryans hain, they are the superior race and the rest are the inferior races, and we have to suppress the inferior races, and the superior Aryan race should dominate the Europe, and by extension the Sapir, they should dominate the world. So that's a very racist concept to begin with. हिटलर ने यूजेनिक्स के कॉन्सेप्ट को बहुत एम्फसाइज किया था. यूजेनिक्स इज दिस कॉन्सेप्ट कि आप इस तरीके से मेटिंग और रिप्रोडक्शन करवाई जाए ताकि बेस्ट पॉसिबल ह्यूमन ट्रेट्स और ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो. जिस तरीके से एनिमल ब्रीडिंग कराई जाती है वैसे ह्यूमन ब्रीडिंग करवाई जाए. बट द प्रॉब्लम इज कि ह्यूमंस के अंदर ये प्रिंसिपल अप्लाई करना इज वेरी डीह्यूमनाइजिंग, बिकॉज आप ये नहीं कह सकते कि एक रेस के अंदर ज्यादा अच्छे फीचर्स आए या दूसरी रेस के अंदर कम है, मगर क्योंकि यूजेनिक्स हैज ऑफ्टन कोरिलेटेड विद रेसिज्म विद less basis in science but more basis in stereotypes, therefore it has been discriminatory in its nature. तो एडोल्फ हिटलर की जो किताब थी माइन काम्फ, which means my struggle, वो उसके अंदर उसने इस कॉन्सेप्ट को इनकॉर्पोरेट किया, और जब वो पावर में आया तो उसने इसको इस चीज को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया बाय यूजेनिक लेजिस्लेशंस इंट्रोड्यूस करवा के. उसने किस तरीके से यूजेनिक्स को इम्प्लीमेंट किया था पॉलिसी मेकिंग के अंदर, उसके अंदर मुख्तलिफ तरीके थे. सबसे पहले तो उसने मुख्तलिफ लोगों को कंसिडर किया टू बी द इंफीरियर्स. उसके अंदर ही आइडेंटिफाइड पीपल हु वर पुअर, हु वर मेंटली इल, हु वर डिसेबल्ड, women who were engaged in sexual work, homosexuals, Roma and Jews, जो racial groups थे, इन सबको उसने defectives के नाम से आइडेंटिफाई किया, और इनके खिलाफ जो है ना वो यूजेनिक प्रिंसिपल्स अप्लाई किस तरीके से किए कि आइदर दे वर स्टेरिलाइज्ड, व्हिच मींस दे वर मेड सेक्सुअली इनएक्टिव, उनको सेग्रीगेट किया गया, उनके कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए गए, यूथनेशिया यानी उनको पिल्स दी गई ड्यू टू व्हिच दे डाइड, या उनको मैस मर्डर किया गया, उन्हें कंसंट्रेशन कैंप्स में दे वर बर्न्ड अलाइव, ऑल इन दिस परसूट कि हम क्लेंस कर रहे हैं जर्मन रेस को विद दीज डिफेक्टिव्स के ये जो इंफीरियर रेसेस हैं उनसे करें, और सिर्फ एक सुपीरियर रेस बचेगी और वो रिप्रोड्यूस करेगी तो वो बेहतर रेस होगी. सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट. हॉलोकॉस्ट इज द फेमस इवेंट दैट टुक प्लेस अंडर नाजी रूल, जिसके तहत एडोल्फ हिटलर की रिजीम के अंदर देयर वर 6 मिलियन Jews were murdered, which were amounted to 2/3 of the total Jewish population in Europe. इस दौरान इसके लिए जो तरीकाकार अपनाया गया था, there was this network of concentration camps जिनके अंदर these people were starved to death, they were burnt alive after the invasion of Poland in 1939, जो कि सबसे पहली invasion थी हिटलर की, which kicked off World War II. उसने बहुत ज्यादा ghettos create किए. Ghettos are the places with which you segregate people into different groups. तो अगर एक खास कम्युनिटी को सिर्फ एक टाउन में रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, जैसे अक्सर कहा जाता है कि हजारास पाकिस्तान में है और वो सिर्फ एक दो एरियाज हैं अपने एरियाज में जहां पर वो एग्जिस्ट करते हैं और उन सबको वहां पे कॉन्सेंट्रेट हुए हैं, तो दे आर गेटोइज्ड.
ठीक है। तो इस तरह अगर गवर्नमेंट स्टेट किसी को गेटो कर रही है, गेटोवाइज कर रही है, ये तो एक नेचुरल गेटोवाइजेशन की मिसाल थी ना, स्टेट किसी को गेटोवाइज कर रही है तो उसको परसिक्यूट करने के लिए कर रही है, उसको सेग्रीगेट करने के लिए कर रही है. And then there were forced concentration camps, the number of which went beyond 42,000. और इस तरह की दूसरी detention sites create की horrible form of violence was inflicted upon these people. कभी कभी ये क्वेश्चन भी पास पेपर में आ चुका है. 2017 में भी ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि क्या कॉजेस हैं फाशिज्म के राइज के, क्या कॉज बने थे इन द 20th century in particular. तो उसके अंदर मुख्तलिफ कॉजेस हैं which created a conducive environment for the rise of fascism. The first one was the reaction to industrialization. 19th century के एंड पे लेट 1800s के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई विद द डेवलपमेंट ऑफ स्टीम पावर. उस इंडस्ट्रियलाइजेशन ने पूरे सोसाइटल मेकअप को चेंज करके रख दिया. उसकी वजह से नई नई सिटीज बनना शुरू हुई, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बदल गया. फ्रॉम स्मॉल सस्टेनिंग ग्रुप सोसाइटीज इट बिकेम अ वास्ट अर्बन कैपिटलिस्ट कॉर्पोरेट कमर्शियल सोसाइटीज बनना शुरू हो गई. एंड ओल्डर मॉरल्स एंड ओल्डर सिस्टम्स एंड सोशल सिस्टम वाज इवेडिंग. तो इतने फास्ट पेस सोशल चेंज के अंदर लोग अपने आप को नेविगेट नहीं कर पा रहे थे. सो द ओल्ड मॉरल ऑर्डर एंड द न्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज नॉट कोपिंग अप एंड देयर वर न्यूअर मॉरल्स दैट वर कमिंग अप, बट पीपल वर नॉट ओके विद दिस न्यू इमर्जेंट सोशल कंडीशंस. और एक अजीब सी, जैसे आप जब भी देखते हैं कि नई नई सिटीज बनना शुरू होती हैं तो एक कॉन्फ्लिक्ट आती है कंजर्वेटिव क्लास में, लिबरल क्लास में. सो टू पुट इट सिंपली, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने एक गैप क्रिएट कर दिया था. तो फाशिज्म ने जो डॉक्ट्रिन दिया था उसके अंदर इट बिलीव्ड इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेकिन वो मॉडर्निटी को इंडस्ट्रियलाइजेशन जो लेकर आई थी उसके साथ ट्रेडिशनल मॉरल ऑर्डर ऑफ डिसिप्लिन, यूनिटी, कलेक्टिवनेस, एक रूल बाय लीडर, और वो पुराने नोशंस को इकट्ठे उन्होंने जोड़ा ताकि आप, तो इट वाज दिस यूनाइटिंग मॉडर्निटी विद दिस न्यू फाउंड technological tools to advance oneself. The same was with the which eugenics were employed, कि हम अपनी नेशन को मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल टूल्स यूज करते हुए क्लेंस कर देंगे डिफेक्टिव से और एक मॉडर्न और एक ज्यादा बेहतर रेस को क्रिएट करेंगे. सेकंड दैट वर्ल्ड वॉर वन की वॉर को वॉर ऑफ ट्रेंचेस भी कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर वॉर ट्रेंचेस के अंदर, खंदकों में ली गई थी, और सोल्जर्स फॉर इयर्स फॉट इन ट्रेंचेस, और उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट था. लोग उस वॉर ट्रॉमा में थे, पीटीएसडी बहुत ज्यादा सोल्जर्स को हुआ था. एंड प्लस बिकॉज वायलेंस वाज यूज्ड बाय पीपल फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दैट वायलेंस बिकेम नॉर्मलाइज्ड. दे बिलीव दैट इफ दे हैड टू डू एनीथिंग पॉलिटिकल, कोई भी काम करने के लिए, they had to use violence. They stopped believing in reconciliation, they stopped believing in dialogue or conflict resolution, और ये चीजें redundant हो गई. Violence was normalized in political use. Even Adolf Hitler, for instance, fought in World War I in the trenches on part of German army. तो जर्मनी की तरफ से he fought in the war. तो there is this very direct causal link with the normalization of the violence in World War I and the use of violence under fascism. The third was the Treaty of Versailles and the War Guilt Clause. Treaty of Versailles के तहत World War I की सारी जिम्मेदारी जर्मनी के ऊपर डाल दी गई थी, even though other countries were also responsible for the war, but जर्मनी को responsible ठहराया गया. Plus War Guilt Clause के तहत जर्मनी को रेपरेशंस पे करने के लिए भी फोर्स किया गया कि चूंकि जर्मनी की वजह से वॉर हुई है इसलिए जर्मनी नीड्स टू पे रेपरेशंस. आगे ही जर्मनी लॉस्ट द वर्ल्ड वॉर वन और ज्यादा इकोनॉमिकली क्रम्बल था, फिर ग्रेट डिप्रेशन भी आ गया उसके बाद, और जर्मनी ने रेपरेशंस भी पे करनी थी, और उनको उनकी नेशनल प्रेस्टीज भी उनसे छीनी गई हुई थी, उनको जलील किया था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के अंदर बाय हैविंग दिस क्लॉज इनकॉर्पोरेटेड. तो इसका मतलब एक बड़ी रिवेंजेंस और रिवेंज का एलिमेंट बहुत स्ट्रांगली जर्मनी के अंदर रन करता था. और जब एडोल्फ हिटलर जैसा बंदा आके उसने कहा कि मैं आपको लीड करूंगा, एंड ही वाज कैरिस्मेटिक, ही वाज वेरी पर्सुएसिव, तो पीपल नेचुरली फॉलोड हिम. फोर्थ इज दिस लैक ऑफ स्ट्रांग पेरिनियल आइडेंटिटी इन यूरोप. जो दो कंट्रीज सबसे ज्यादा फाशिज्म के अंडर आई थी वो कंट्रीज थी जो नई यूनिफिकेशन हुई थी जिन कंट्रीज की. इटली और इटालियन यूनिफिकेशन और जर्मन यूनिफिकेशन 19th सेंचुरी के एंड में, लेट 80s, ये
1800s के अंदर कंप्लीट हुई थी. उससे पहले डिफरेंट सिटी स्टेट्स थी इटालियन, इटली की वेनिस, फ्लोरेंस, मिलान, ये अलग अलग सिटी स्टेट्स थी जिनको मज्जीनी के अंडर यूनिफिकेशन हुई थी. इसी तरह जर्मनी वाज यूनिफाइड अंडर ऑटोमन बिस्मार्क. तो अभी नेशनल कैरेक्टर उस तरीके से यूनिफिकेशन उस तरह कंप्लीट नहीं हो सकी थी. दैट इज व्हाई एक सोर्स ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, दे वर डेस्परेटली लुकिंग फॉर अ सोर्स ऑफ नेशनल आइडेंटिटी एंड नेशनल यूनिटी, जो कि मुसोलिनी और हिटलर ने उन लोगों को वहां पर प्रोवाइड किया. इट ऑल्सो प्रोवाइडेड होप फॉर अ स्ट्रॉन्ग एंड बेटर फ्यूचर बिकॉज उसको डेमोगोगरी के जरिए उन्होंने लोगों को परसुएट किया. द लास्ट वाज दिस पैक्ट ऑफ स्टील व्हिच वाज द अलायंस बिटवीन इटली एंड जर्मनी फॉर एग्रेशन. In so these were the causes that led to the rise of fascism.